My Sri Aurobindo, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଦ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟୋର ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କିଛି ଲାଇନ୍ସ କଭର କରିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ ଭାଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। we'll read some lines and then go on with the discussion ahead. ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, we will move on to page number 50, lines 150 upuru. Book 1, the book of beginnings, canto 4, the secret knowledge, page 50, line 150. An aspiration in the night's profound, seed of a perishing body and half-lit mind, uplifts its lonely tongue of conscious fire towards an undying light forever lost. Only it hears soul echo of its call, the dim reply in man's unknowing heart, and meets, not understanding why it came, or for what reason is the suffering here, God's sanction to the paradox of life and the riddle of the immortal's birth in time. Along a path of aeons serpentine, in the coiled blackness of an assigned course, the earth goddess toils across the sands of time. A being is in her whom she hopes to know. A word speaks to her heart she cannot hear. A fate compels whose form she cannot see. In her unconscious orbit through the void, out of her mindless depths she strives to rise. A perilous life her gain, a struggling joy, a thought that can conceive but hardly knows, arises slowly in her and creates the idea, the speech that labels more than it lights, a trembling gladness that is less than bliss, invades from all this beauty that must die. Alarmed by the sorrow dragging at her feet, and conscious of the high things not yet won, ever she nurses in her sleepless breast an inward urge that takes from her rest and peace. Ignorant and weary and invincible, she seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her marred nature needs, a breath of Godhead on her stone and mire, a faith she craves that can survive defeat, the sweetness of a love that knows not death, the radiance of a truth forever sure. Iti, as we move forward with the revealing knowledge that comes across, ज्ञानर अनेक रूप जहा धीरे धीरे आम सम्मुखरे उन्मुक्त हेबाकु लागिछि, निजको खोलिबाकु लागिछि, सेथिरे एई सेक्शन आरंभ रे आमे एई जो जगतगत ज्ञानटी निजको गोटे अलगा ढंग रे प्रकाश करबाकु जाउछि।
এই জগৎটিକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି এই ଜଗତ ମାନେ ଆମେ we consider this mortal world with all its universal force effect also କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆମର ଏଇ world ଟିକୁ ଗଭର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଚଲଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ସେ এই ଜଗତଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ এই ଜଗତଟିକୁ ରଚନା କରିବାରେ ତାର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗତିବିଧିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଚାଲିବା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି କି ସିଏ ବି এই ସବୁ ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଇଫେକ୍ଚୁଏସନ ରେ ବା ତାର ଇଫେକ୍ଟ ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରୁଛି ସବୁ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆମେ ଯେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି এই ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ସେମାନେ ସବୁ ସେଇଥିରେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ହେଲା ତ ଲାଗିବ କି ସେମାନେ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସେସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି गुड एंड बैड फोर्सेस भी अछंती तो ये सब भितर आमे देखिले प्रथमे एटी श्रीबिंदु गोटे कॉन्टेक्स्ट किछि मूवमेंट रे आनुचंती जे कहउचंती कि मनुष्य भाबे कि ये सबु होय तो गोटे चांस नेसेसिटी आ विल रो कारण हे पारे गोटे वेग एक्सपेरिमेंट गोटे इग्नोरेंट वर्ल्ड को चलै चलची अर्थ गोटे ब्रूट मैकेनिक एक्सीडेंट हे पारे ଆଉ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନିଜର ଫର୍ଟୁଇଟସ୍ ଫେଟ୍ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ଆଡକୁ ଚାଲିଛି ନା ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା କଣ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ନା ସେ ଆଗକୁ ଜାଣି ପାରୁଛି କି ଆଗକୁ କଣ ହବ ଅଜ୍ଞେୟରୁ ଅଜ୍ଞେୟ ଆଡକୁ ହିଁ ସେ ଯାଉଛି ever surround our brief existence here gray shadows of unanswered questionings the dark inconscient signless mysteries stand up unsolved behind fate's starting line भाग्यर लाइन आगे रखी सी जमती चली गोटे पॉइंट रु आउ गोटे पॉइंट को से किछि बुझू अबा न बुझू तापरे एठी गोटे मूवमेंट स्टार्ट होची जोठु हमें आज रो पढ़ाटी आरंभ करछन an aspiration in the night's profound an aspiration in the night's profound गोटे जनरल अनकॉन्शियसनेस समस्तंग भितर रही गोटे अचेतनता गोटे किछि भी जोटा जनरल समय रे बा गोटे साधारण समय रे आम भितर सचेतन न थाए किंतु ता मझिरे भी आस्पृहार गोटे दीपकटे जळु थाए तार जो प्रज्वलन से जो एस्पिरेशन रो सीड टी रही सी ए पेरिशिंग बॉडी आउ हाफ लिट माइंड को ही निजर इंस्ट्रूमेंट बोली धरी एठी श्रद्धावान कर गोटे very सुंदर कॉन्टेक्स्ट माने लेखाटी रही टिके ताकू पढुची आपण माने सुनंतु in the midst of these uncertainties there is an aspiration like a little flame in the depths of the darkness of the night. Sri Aurobindo says that this aspiring flame is the seed of a perishing body and half-lit mind. Why do we have a physical body? And why do we have this ignorant half-conscious mind? Only because of that little flame. That little flame is lifting up its lonely tongue of conscious fire. Its aspiration is always reaching up towards an undying light. It has the sense that somewhere there is a light which does not die, but it also has the feeling that it has lost that light, lost it forever. Can I call it profound? Profound माने होची deep. An aspiration in the night's profound. Night पुनी रात्रि एठी रात्रि आउ किछि नै हमरो निश्चेतना बा हम भितरे थिबा गोटे नॉन अनकॉन्शियसनेस को बुझौ ये
एन कैपिटल रहिबाटा व्यक्तिगत जने भाबी तो पारिबो किंतु विश्वगत जो निश्चेतनाटी बा अचेतनाटी रही रात्रिर गोटे अंधकारमय चेतनार जो परिभागटी रही जे कौनसी जिनस को गोटे सतत चेतना सहित न धरिबा को चाहे न बुझिबा को चाहे सेपरी गोटे अंध तमस्मय गोटे वातावरण भितरे मध्य आस्पृहार गोटे छोट फ्लेम टी जलु थाए सी ही पृथ्वी सृष्टि रे आ मनुष्य भितर भी जन इंडिविजुअल भितर भी गोटे पेरिशिंग बॉडी आउ हाफ लीट माइंड भितर बीज रूप रे एकाकी थिले मध्य सी निजर सचेतन अग्नि रूपक जिह्वा को सेई अमर आलोक आड़ को प्रेरित करुଥାଏ ଯାହାକୁ ସେ ଭାବି ନେଇଛି କି ସେ ହଜି ଯାଇଛି ଆଉ ତେଣୁ ସେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଫର ଏଭର ଲଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେ ସିଆଡକୁ ହିଁ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇକି ସେ ତାକୁ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଖୋଜୁଛି यार ठीक गोटे फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हमको यज्ञ बेले देखा जाए यज्ञ जिते आरंभ हुए से यज्ञ होता प्रचारक सी बीज मंत्र पढ़ती बीज मंत्र पढ़ा बेले जिते अथर्वशीर्ष मंत्र पढ़ती किंबा कौन देवतांकर आवाहक मंत्र पढ़ती से अग्नि रे जिते हबी जिते घृत ये सब यज्ञर समिध ये सबू से दि जाए से अग्नि जोर भाव में प्रज्वलित होगा लगे अग्नि जमती जोर प्रज्वलित होगा लगे से देवता मानकर आवाहन मंत्र सब पाठ करा जाए तो दीज आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कोठी ना कोठी जानते कि सही यज्ञ कुंड रे सबू किछि निर्जीव थाए किंतु सेठी ही जीवन बा प्राण शक्ति चेतना शक्तिर आवाहन करा जाए ताकू सेठी इन्वोक करा जाए तांकर प्रतिष्ठा करा जाए ठीक सेमिति आम भितर मध्य थिबा से एस्पिरेशन टी सी भी सीड भलिया सी जेमती जेमती निजर प्रेयर्स को निजर फेथ को निजर विश्वास को दृढ़ करिवो सी जेमती से नॉलेज रो व्हीकल भलिया कैरियर भलिया से ऊपर को ताकू उठेइबो आम भितर थिबा सेही आस्पृहार तीव्रता बढ़िबो अनडाइंग फायर आडु अनडाइंग लाइट आडु से तापर गोटे सेमिकोलन देकी दे आउ टिके ताकू एक्सप्लेन करचंती कि सी एडी ओनली इट माने कि दैट फायर अपलिफ्ट देखो एन एस्पिरेशन इट सब एस्पिरेशन को बुझौची एस्पिरेशन सब्जेक्ट इन द नाइट्स प्रोफाउंड इन डीप नाइट रहला सी सीड ऑफ पेरिशिंग बॉडी एंड हाफ लीट माइंड इट इज सीड हला एस्पिरेशन कहना डबल कमा भितर रही गला से कॉन्टेक्स्ट सरला पुणी आउथरे देखंतु एन एस्पिरेशन uplifts its lonely tongue of conscious fire towards an undying light forever lost. It's a sentence. Then explains कि aspiration ta कौन करे only it again it is aspiration only it hears soul echo of its call टा कहार कॉल टा aspiration रो हुए ना आस्पृहारे से प्रेयर करे से निजर प्रार्थना जनाए से केवल तारी प्रार्थनार इकोटी शुणे द डीम रिप्लाई इन मैन्स अननोइंग हार्ट प्रथमे प्रथमे से जिते निजर प्रार्थना गुड़ी को निजर वेदना गुड़ी को निजर जंत्रणा गुड़ी को सब काढ़ी जिते भगवान को छुड़ा सब अर्पण कर दिए समर्पण कर दिए आगे सब नेउछाड़ी दिए से आउ किसी नहीं केवल सेगुड़ा ही रिवर्स केवल इको तार सब शुभे द डीम रिप्लाई कहते द डीम रिप्लाई इट माधव पंडित कहते बट ऑल दैट इट हियर्स द ओनली आंसरिंग इको टू इट्स कॉल इज सम भेग रेस्पॉन्स इन द अनअवेयर हार्ट ऑफ मैन अनअवेयर अननोइंग को कहले अनअवेयर हार्ट ऑफ मैन ही डज नॉट रेस्पॉन्ड कॉन्शियसली बट इंस्टिंक्टिवली this flame of upward aspiration meets the sanction of God to this paradox of life.
it does not understand why at all the sanction was given, does not understand the reason for the existence of all this suffering here. It only realizes that all here, with its constant mixing of contradictories, has been sanctioned by God for whatever reason, that the riddle of the birth of the immortal in mortal time has been posed by the will of God. Only it hears sole echo of its call, the dim reply in man's unknowing heart, and meets तार निजर से अज्ञेय हृदयर इकोटी को तो से सुने ही तथा साक्षात्कार करे, and meets not understanding why it came or for what reason is the suffering here. देखो पुणी डबल कमा भितर रहा जिते सेंटेंस भितर दीटा कमा मझे किसी भी गोटे टेक्स्ट आसे सेटा से प्रीवियस सब्जेक्ट को केवल एक्सप्लेन करुछि, एंड मीट्स कहा संगे देखा हुए से कथाटी रहिला सेठी देखा हुए एटा न बुझी जे से केउठु आसिला एवं तार कारण कौन एठी आसिकी एते दुख जंत्रणार सबु सृष्टि करिवार किए आसिला कहा सहित तार देखा हला गॉड सैंक्शन टू द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। से जानिला जो एस्पिरेशन नहीं कि ऊपर को जाइथिला तार चेतना तार एस्पिरेशन को बहन करिकी ऊपर को गला सेठी इकोरे जो रेस्पॉन्स आसिला सेथुरु से जानला ये सब भगवान सैंक्शन करछ ता जीवन रे जहा भलो घटुची जहा मंद घटुची जहा ताकू ठीक लागुची जहा ताकू भूल लागुची जहा ताकू सुविधा दउची जहा सब ता जीवन रे असुविधा आणुची ये सबू कौन तांकरी पहले सैंक्शन रे चलची। मो जीवन रे जिते पैराडॉक्स माने होची रिडल गोटे जेमती पजल भलिया कंफ्यूजन गोटे कॉन्ट्राडिक्शन भलिया कॉन्ट्राडिक्टरीज होची पैराडॉक्स। तो मो जीवन रे ते कॉन्ट्राडिक्शंस रो सैंक्शनर होचंदी सी निजे सी तो मते सब प्रकार सुख सुविधा देथिले पुनी सी ही मते ही आनी देले इस प्रकार सुविधा कथाटा हमको एक्सेप्ट करिया पे केते डिफिकल्ट हे पारे। God sanctioned to the paradox of life and the riddle of the immortal's birth in time. से जानला जे एठी ये सबुर कारण जीवन रो भलो मंद जेते सबु कथा अछि ये सबुर कारण होचंदी भगवान स्वयं तार सैंक्शनर तथा जन्म मृत्यु रो ए जो चक्र सीए जी अमर सीए जी अजन्मा कालर बा महाकालर गतिरे महाकालर यात्रा रे जन्म नेबार ए जो पर्यायटी तापाई मध्य भगवान ही रेस्पॉन्सिबल। Along a path of aeons serpentine in the coiled blackness of an assigned course the earth goddess toils across the sands of time. Aeons माने होची एज आफ्टर एज गोटे लंबा पीरियड ऑफ टाइम होचंदी जुग जुग वर्ष वर्ष मिलियंस एंड मिलियंस एजेस धरिकी गोटे विराट काय सर्प जेमती कुंडली मारिकी बसिला भलिया ये काल मध्य एपरी सर्पेंटाइन भलिया से निजर कोर्स टिकू साइंट कोर्स टिकू कवर करी अर्थ गॉडेस पृथ्वी देवी across the sands of time निजर गति टिकू निर्धारण करछन्ती। Earth is not just a formation of physical matter. Earth is a being, a spiritual manifestation of the divine consciousness. She is a goddess. She बहु परिश्रम करी toils the earth goddess toils across the sands of time. जिनकी तारदी बालू का भूमि है भूमिटे हुए ताहले ता उपरे ए अर्थ गॉडेस बड़ा कष्टरे
in assigned course tiku cover kari chalichhan. The course is not direct, it is meandering, wending, spread over ages after ages. It is dim with science and coiled in darkness. किंतु पृथ्वी एते कष्ट काहे करूची, तार कोन आवश्यक पड़े एते कष्ट? ये पृथ्वी भी तो ग्रो करछि ना, ये समग्र संसार यदि ग्रो करछि केवल गोटिए व्यक्ति किंबा गोटिए समूह गोटिए जाति ग्रो करनी, पूरा सृष्टि भगवान कर सी धीरे धीरे विवर्तन प्रक्रिया भितर समस्त ऊपर उठुछन. The earth goddess is following a path. She has a journey to make, and it is a journey through time, along a path of aeons. She follows a spiral path. Aeons serpentine, it's like a spiral path. It is very difficult for her to cover this journey. It is so hard to struggle where there seems to be almost no progress. Progress, very long, very difficult, very painful. ବର୍ଷ ଧରି billions and billions of years ଧରିକି ତାର evolutionary journey ଚାଲିଛି. Why is she toiling across the sands of time? କାହିଁକି? ତା ପରର ତିନି ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି, a being is in her whom she hopes to know. A word speaks to her heart she cannot hear. A fate compels whose form she cannot see. In her unconscious orbit through the void, out of her mindless depths, she strives to rise. A perilous life her gain, a struggling joy, a thought that can conceive but hardly knows, arises slowly in her and creates the idea, the speech that labels more than it lights. पृथ्वी एते संघर्ष एते कष्ट काई करछि, कारण से जानिछि ता भितरे गोटे सत्ता रहिछि. A being is there, a being is in her, जाहाकू सी जानिबा पई आशा रखिछि, whom she hopes to know. एक एपरी शब्द अछि, गोटे कमांड अछि जे ताकू सब किछि को पालन करिबा पई निर्देश दोछि, स्पीक्स टू हर हार्ट. किंतु से ताकू क्लियरली सुनी पारुनी. यदि सुनी पारंता ताले पृथ्वी एकदम जेमति भगवान चाहुचंदी सेमिति गढी उठंता. किंतु निश्चेतनार गर्त भितरु बाहारिछि, जड़रु प्राण, प्राणरु मन, ये सब अनेक प्रकार डाइल्यूटेड हेकिरि तार सब चेतनार भाग रही. तेणु से शब्द छाणी हेकि आसु आसु आंक पाखरे रिफ्रैक्टेड हो जाउछि. पृथ्वी मध्य संपूर्ण भाव में धरी पारुनी. She cannot hear it clearly. She does not know what the command is exactly. से बहुत स्ट्रगल करछि ताकू बुझिबा पई. को एपरी भाग्य रहिछि जे ताकू कंपेल करूछि, गोटे प्रीडिटर्मिनेशन रहिछि, गोटे डेस्टिनी रहिछि, किंतु पृथ्वी तार से रूप देखि पारुनी. She cannot see its shape or form. से बस चालीछि, driven unknowingly forward. In her unconscious orbit through the void, out of her mindless depths, she strives to rise. एठी माधव पंडित बढ़िया भाव ताको बुझौछन कि पृथ्वी जो सोमनाम्बुलिस्टिकली भॉइड रे जो घुरी बुलीची, से तार ऑर्बिट रे जो बुली चलीची, से संघर्ष करची. शी स्ट्राइव्स टू एमर्ज एंड राइज अबव द अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस डेप्थ्स. से जो निश्चेतना, अचेतना, अवचेतना ये सब भितरु उठी उठी हां से ग्राउंडेड हेकी थिला, ता भितरु से धीरे धीरे उठी चलीची. शी गेन्स लाइफ. जेते कष्ट हो, जेते पेरिलस, जेते प्रिकैरियस हो, से ता भितरु बाहरुची. ता पई सेतिकी ही आन से जॉय, से स्ट्रगल ता ही ता पई जॉय. शी गेन्स जॉय दैट स्ट्रगल्स टू बी. सेई संघर्ष रे ही तारा आनंद रहिची. टू सर्वाइव एंड टू ग्रो despite all that threatens to smother it. To survive and to grow despite all that threatens.
कहले ना पेरिलस लाइफ हर गेन सी चेष्टा करछि आउट ऑफ हर माइंडलेस डेप्थ्स मन माइंडलेस कहीं कहले कारण मनर श्रेणी होछि जोटी कॉन्शियस चेतना रही चेतना जेतेबेले गोटे पूर्ण भाव निये सेतेबेले हम कहबा माइंड माइंडलेस माने कॉन्शियसनेस तळर लेयर्स गुडे करे मते माइंडलेस डेप्थ्स सेते हम जदी कहबा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस इनकॉन्शियंट ए सब लेयर्स मान करे भी से धीरे धीरे उठी उठी शी स्ट्राइव्स टू राइज एक संघर्षपूर्ण एक दुस्सह जीवन ही तार एकमात्र प्राप्य एवं एई संघर्षमय आनंद ही तार एकमात्र हासिल होइछे पर्यंत बा ए थॉट दैट कैन कंसीव बट हार्डली नोज एक एपरी चिंता जहाँ सृष्टि तो हो जाउछि किंतु निजको प्रकाश बा निजको जानी पारुनी निजको परिप्रकाश करि पारुनी निजको निजे बुझी पारुनी केवल गठन हो जाउछि arises slowly in her and creates the idea thought ru idea से तावित्रे उठुछि धीरे से arises slowly in her बुझिन arises slowly in her there is also the formation of thought the faculty of thinking though it can only conceive of things and not know them this thought faculty goes on to shape the idea is a concentration of thoughts it also fashions the expressive instrument of speech धीरे धीरे केते बड़ गोटे थ्योरी को बुझाउछंती कोन कला ए पृथ्वी केमिति बढ़िला से भॉइड रे घुरी बुलथला इन हर अनकॉन्शियस ऑर्बिट थ्रू द भॉइड तापरे धीरे धीरे तार से माइंडलेस डेप्थ्स भितरु से उठिबा को आरंभ कला आनंदर टिके स्फुरण हला किए ता भितर आलोड़न सृष्टि हला सेही सृष्टि भितर से आनंदर टिके स्पर्श पाई कि धीरे 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 ता भितर गोटे चिंतार सृष्टि उठे केमिति से चिंता बा थॉट टी ताकू स्पर्श करिला ता भितरे से थॉट रो प्रभाव निजको गढिबा को आरंभ कला किछि से बुझी पारुनथला से थॉट टी धीरे धीरे जेमति बांधिबा को निजको आरंभ कला गोटे आईडिया से आईडिया धीरे धीरे निजको गठन करिबा को लागिला तापरे आईडिया फल रे गोटे एक्सप्रेशन सृष्टि हला से एक्सप्रेशन निजको स्पीच भाबरे व्यक्त करिबा को आरंभ कला स्पीच हेले तो वर्ड आसीबो ना वर्ड आसिले सेटा नाद आरंभ हो वर्ड आसिले एक्सप्रेशन आसिला एक्सप्रेशन आसिले वर्ड आसिले एनर्जी आसीबो एनर्जी आसिले मैटर क्रिएट हो तेनु थॉट रु आईडिया रु स्पीच बट दिस स्पीच द फर्स्ट स्पीच द स्पीच that labels more than it lights that thought power slowly arises in the earth and it creates idea and speech but our ideas and our speech do not explain anything we can only put labels जेमती स्टिकर लगे ना जेमती लेबल से लेबल लगे देला more than it lights एटी लाइट्स रो माने होची बुझेबा मोर देन इट एक्सप्लेन्स मोर देन इट अवेयर मोर देन इट गिव्स यू नॉलेज एटी केवल सेटा कोन बोली बुझेई देला स्पीच टेक्स्ट से कोन कहिला बुझी सुबी गला किंतु बुझी हेलानी कथरा धरंतु टिके बुझंतु एटी श्रद्धावान को कथार बुझंतु फॉर एग्जांपल इन द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो पॉइंट्स आउट that we have developed an idea and the word evolution but that is just a label for an observed process or mechanism it labels the mechanism but we do not know how or why it should happen that is true of many of our ideas ame kebal taku na dei deichu kintu se kemiti houchi tar experience nahi amku ame jemti koi dochu oda hallucination तो ये गोटे कन्फ्यूजन केवल ना देदेले आमे एक्सप्रेशन देदेले किंतु वी कैनॉट एक्सप्लेन दैट द वर्ड इज जस्ट ए लेबल बट ही थिंक्स दैट बाय गिविंग इट दैट लेबल ही हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू केवल ताकू गोटे जे पर्यंत से जिनसटी एक्सप्रेशन रु एक्सपीरियंस को न आसी एक्सप्रेशन इज नॉट एनफ टू give you a knowledge of the thing expression is
may be enough to give you the idea or transmit or translate the idea, but it cannot give you the knowledge of the thing. Only experience can give, expression may not. Even Om, we know that the Mula, Nada Huchi Om. Now everybody has labeled it. It is Om, Om. But ता भितरे थिबा से महाशक्ति को जे पर्यंत निजे भितरे निजे जने ताको जागृत न करछि से ओम रो शक्ति को से पर्यंत से किछि जानि परिबनी. जितले बॉडी रो प्रत्येकटी सेल, प्रत्येकटी मॉलिक्यूल, प्रत्येकटी कोण अनुकोण जेतेबेले से ओम रो नाद रे वाइब्रेट करियो लागिवो सेतेबेले से जानिबो कि सृष्टि रो नाद सहित मो नाद एक हैला. ए महानाद को से फील कले जाई कि से ओम सहित से एक्वेंटेड हबो. Before that it is just a label. Mass of the label. किंतु जितेबेले मां शब्द सहित आमर हमें मां को भाबी दउछंदी, मां को प्रेजेंस आसी गला, मां को जितेबेले जानि नथिले संसार रे किए नाही जे मां न कहउची. किंतु हमें जितेबेले जगत जननी को संगे मां को जोड़ देले आ तांको भाबी करी मां बोली जितेबेले डाकुचंती तेबेले से एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन ही रोनी सब किसी परिवर्तन ही जाउची. The idea, the speech that labels more, it more पाखरे pause नेले लाइन टी बुझी परिवे. The idea, the speech that labels more than it lights, a trembling gladness that is less than bliss. गोटे एपरी ग्लाडनेस आसुची किंतु से आनंद ठारू कम. गोटे देखिदेले आश्चर्य लगुच कारण देखिदेले जानिदेले हठात किना गोटे दर्शन हो गला, गोटे ग्लाडनेस आसुची किंतु आनंद दैट इज लेस देन ब्लिस invades from all this beauty that must die. ये भारी कष्टकर लाइन माने दुखद दायक टिके. This Srimati Sadhavan भी लिखते हैं, these poignant lines express something else that the earth has gained on her journey, an emotion, gladness, an emotion, a form of delight. It is a trembling gladness, a fearful gladness. Ananda nahi, it is less of bliss. That emotion has entered the earth from the awareness of all the beauty in the world, all this beauty that must die. एना खाली एक्सप्रेशन ना तो तेणु से एक्सप्रेशन रो एज टा बहुत कम, से एक्सप्रेशन बहुत शीघ्र मरजिव जदि से एक्सपीरियंस को न गला. धीरे धीरे से एक्सप्रेशन टा जेमती मेमोरी रे फेड हेबा को लागिवो से हजि जिवो. जदि से थरे एक्सपीरियंस को आसी गला आउ निजको रियलाइज करदेला भितर आपण कथा डीपली चिंता करन. कौन गोटे घटना सहित कौन गोटे आपणकर सेमतिया एक्सप्रेशन जोटा एक्सपीरियंस को कन्वर्ट हेतिबो ता संगे जोड़ंतु ए लाइन रो प्रभाव टी को फील कर परिबो. आपण एते पढिथिबे मांको विषय, श्री अरविंदो विषय, आश्रम विषय, समाधि विषय, किंतु से फर्स्ट दर्शन, से फर्स्ट टच, how was that but one single moment जोटा आपण एते थर जाय कि मध्य से फर्स्ट टाइम टाको केबे भूली परनु. that's the power of experience. A trembling gladness that is less than bliss. Everything else is less than bliss. And everything, jete beautiful hoitau na kahi, all that is beauty, all this beauty that must die. ये सब jete sundar hoitau na kahi, ये सब chali jibo. The earth goddess is toiling across the sands of time, and as she journeys, alarmed by the sorrow dragging at her feet and conscious of the high things not yet won,
ever she nurses in her sleepless breast an inward urge that takes from her rest and peace. ये तो ग्लैडनेस टिके ब्यूटी टिके सब बाटरे भेटिले किंतु गोटे सरो सब बेले तांकर हृदय को विच्छिन्न कर हृदय टू अधिका से कहले अलार्म्ड बाय द सरो ड्रैगिंग एट हर फीट कि गोटे वेट भलिया गोटे सिंकुली भलिया अछि जे तांको गोड़ को बांधी की धरुची होल्डिंग हर बैक इन हर जर्नी अक्रॉस द सैंड्स ऑफ टाइम. अलार्म्ड अलार्म्ड कहीं बारंबार चेतई दूची कोईपरी जंत्रणा जहाँ तांको गोड़ को बांधी दूची ड्रैगिंग भिडियम एट हर फीट and conscious of the high things not yet won. She janichandi that there are high things kono the bliss, that beauty, that light, that knowledge, that truth, these are the high things. किंतु से सब से गुडी को प्राप्त ही परन जीति परन. It Madhav Pandit लिखुछंदी the sorrow of earth life pulls and slows her down. She is also aware of the many high things that are still only ideals, not yet actuals, and that makes her conscious of the much that is yet to be won. She say high things gudika jitiba ku chahuchanti, not yet won. She has no sleep, no respite. She is incessantly at work. All the while there is an urge to become more and more aware, conscious within, for only so can she hope to extend her range of action and achieve the high objective she is striving for. कौन करुछंदी से ता पई? Ever she nurses in her sleepless breast. Sleepless कहले काना the earth never sleeps. से जो इनवर्ड अर्ज गोटे अछि तांको भितरे से तांको सोइबा को दउ से नर्चर करी चलीचंती से अर्ज टी निद्राहीन वक्ष भितरे से गोटे इच्छा को गोटे एपरी अर्ज को पोषण दे चलीचंती पोषित करूचंती जहा कि तांको ठारू तांकर समस्त आराम और शांति को छड़ई नहीं. Ever she nurses in her sleepless breast an inward urge that takes from her rest and peace. तेणु आमे जेहेतु सबु ए पृथ्वी और पृथ्वीगत चेतनार अंश आमठू मध्य ए रेस्ट और पीस सबु चली जाइछि. ए इनवर्ड अर्ज पृथ्वी रे अछि माने आमे सबु सेथिरु जाता आमे आम मानक भितर भी से इनवर्ड अर्ज अछि. ए लिखुछन से कथा श्रद्धावान मध्य लिखिछंती we are children of earth and part of the earth consciousness, so something is always driving us forward. We are part of that struggle of the earth to find the being within, the fate whose form we do not know. That inward urge is always there. We can have moments of happiness, moments of relief, but then something will always come to drive us further on our journey. Ignorant and weary and invincible, she seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her marred nature needs, a breath of Godhead on her stone and mire. एक सुंदर कथा. तांका प्रकृति टी छिन्न भिन्न ही जाउछि. Ignorant, the earth goddess is still ignorant. अविद्या रे ग्रासित होइकी रहिछि. Weary, tired and invincible. तांकु ताकु के पराजित करि परिबनि. She cannot be easily conquered. Ignorant, weary, invincible. एवं से निरंतर भावरे निजर
सोल रो वार टी को लड़ी चली अतीब जंत्रणार संघर्ष रे चली से युद्धटी एंड क्विवरिंग पेन शी इज डिवाइन एंड इमॉर्टल and that inward urge towards all the high things is keeping her going. She will not give up. She is continuing her search through the soul's war and quivering pain, terrible pain. She is still seeking kono, pure perfection that her wounded nature needs. Marred mane hochi marred, marred माने होची स्पॉइल्ड वुंडेड इंजर्ड से देखुचंती मोर प्रकृति एबे भी परफेक्ट हेनी पृथ्वी एटा अर्थ गॉडेस कथा पडिछि ना सब पृथ्वी देखुची मोर प्रकृति एबे भी पूर्ण हेनी परफेक्ट हेनी एथिरे एबे भी स्कार्स अछि एथिरे एबे भी त्रुटि रहिछि एथिरे एबे भी खंडिया खाबरा हेकिरी रहिछि ताकू भलो से विश्व प्रकृति निर्माण हेई पारिनी मनुष्य मध्य संपूर्ण भाव में परफेक्ट हो पारि आहुरी परफेक्शन दरकार प्योर परफेक्शन दरकार द प्योर परफेक्शन हर मार्ड नेचर नीड्स शी फील्स हर ओन इम्परफेक्शन आउ कौन दरकार शी नीड्स ए ब्रेथ ऑफ गॉड हेड on her stone and mire. Mire, M-I-R-E, mire is actually a dirty mud on a city street after rain. It is like a picture, vision debaku chaunchanti, as if like रास्ता टी कादुओ भरा हो किंबा पत्थर रे लेट डाउन हे थाउ जहा हे थाउ ना कहीं सेठी से चाहूचंती कि जने देवतुल्य व्यक्ति आसी कि निजर पद चिन्ह बा निजर स्पर्श दे दी कि जान जोठी सुगम रास्ता अछि जोठी चली जाई हबो पत्थर पडिची बढ़िया से सेठी सेठी भलरे चली जांतु जोठी कादुओ हे कि रहिची सेठी मध्य से निजर पद चिन्ह दे दी कि जान खरा हो किंबा वर्षा हो मंद अमंद माने भल मंद सबुथिरे भगवान निजर स्पर्श अ ब्रेथ ऑफ गॉड हेड ऑन हर स्टोन एंड मायर पृथ्वी रे जो प्रार्थना याकू योगा ऑफ द अर्थ कहले अत्युक्ति होबो कहना सी भगवान को पाए निज भितरे गढ़ुची तार भी जोग एटा आ पृथ्वी गढ़ुची माने पृथ्वी केवल बाली माटी भितरे बा पत्थर भितरे पहाड़ भितरे जंगल भितरे गढ़ुनी जीव जंतुंग भितरे गढ़ुनी प्रत्येकटी मनुष्य भितरे मत जड़ प्राण चेतन अचेतन सबू भितरे से भगवान को धीरे धीरे रूप देवा को लगुच द अर्थ बीइंग मे बी इग्नोरेंट इन हर नेचर शी क्रेव्स फॉर अ ब्रेथ ऑफ गॉड टू वाइटलाइज हर ग्रॉस मटेरियल क्रिएशन फॉर ओनली दिस एक्शन फ्रॉम ऑन हाई कैन एनर्जाइज एंड अपलिफ्ट दिस लोअर क्रिएशन she craves आपरे कहउछन कोन she craves इवोल्यूशनरी प्रोसेस रे भलो मंद बहुत जिंस बाहर छी किंतु मंद तक तो छाड़ी होबनी से माने भी ऊपर को उठिबे केमिति उठिबे a faith she craves that can survive defeat the sweetness of a love that knows not death the radiance of a truth forever sure tinta jinsa of faith she craves that can survive defeat कौन मागुची पृथ्वी पृथ्वी तीनोटी जिंस कामना करुची
तार एस्पिरेशन रो तीनोटी भाग दिस इज द एस्पिरेशन फॉर द अर्थ ऑफ द अर्थ शी क्रेव्स शी लॉन्ग्स फॉर इंटेंसली मागुची गोटे जिनस कांस्टेंट फेथ एपरी श्रद्धा फेथ दैट कैन सर्वाइव डिफीट जेते थर हारिबा को पड़ू किछि असुविधा नहीं मोर श्रद्धा रे केबे टिकिए भी परिवर्तन न आस जिते माड़ बाजुची बाजू जिते पराजय अच्छी ना आस जिते थर हारिबा को पड़ू श्रद्धा रे केबे भी टिकिए भी कमी न आस श्रद्धा टिकिए भी कम न हो कि एते डाकिली एते मागिली एते जाचिली ये जो सब कहीकि आम ठाकुर गोटे प्रेशर बिल्डअप कला भाया आम करूना कॉन्ट्रैक्ट साइन कला भाया टेंडर देला भाया जमी कथबार्ता ये सब मास्टर बिंदु को जाना लोक तो आगे ये सब जिते शीघ्र दूरे जीव भल ये सब अभ्यास को छाड़ी दिंतु ये सब जिते शीघ्र विश्वास हरबे भल डोंट बी ट्रांजैक्शनल विथ द गॉड्स मां पाखे शिवबिंदु पाखे तो फेथ लूज कर प्रश्न उठुनी किंतु एमिति भी कौन सी देवता पाखे कौन सी व्यक्ति पाखे डोंट बी सो ट्रांजैक्शनल सब जिनस को गोटे देण नेण हिसाब रे देखंतुनी केवल देबा नेबा बिजनेस ओरिएंटेड लाइफस्टाइल केते जे मनुष्य को ऊपर को उठेई परिबो वेरी डिफिकल्ट टू से प्रत्येक जिनस को से देबा नेबा एस्पेक्ट रे देखंतु एते गिरी कहली एते गिरी मागिली एते आपण जेते एते सेते लगेले किछि हबनी जिते सी चाहिए सेते ही हम और सेते ही आपको एक्सेप्ट करिया को पड़िबो तेनु श्रद्धा रे टिके भी अभाव आसीबा को देबेनी हौ मु इच्छा करथिली तो मो इच्छाटा कोन तांको इच्छाटू बड़ कि सी इच्छा कले तेनु मो इच्छार कौनसी मूल्य नाही मो माँ इच्छा करिक मते देइचंदी एटा ही श्रेष्ठ एति की भाबी देबे और छाड़ देबे जहां आपण भाबी थिले कागज रे लेखि देबे चिरिक दी फाळ करिक ताको फोपाड़ देबे मो मां को इच्छा रहिला किछि हबनी जीवन रे से इच्छा करथिले सेटा ही सत्य सेटा ही चरम सेटा ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ सेटा ते स्ट्रांग हवा दरकार विश्वास अ फेथ शी क्रेव्स दैट कैन सर्वाइव डिफीट तापरे कोन मागिले द स्वीटनेस ऑफ ए लव दैट नोज नॉट जीवन मागी नांती द स्वीटनेस ऑफ ए लाइफ को नांती द स्वीटनेस ऑफ ए लव प्रेम ही मृत्यु को जय करिबो एक एपरी प्रेम जहा मृत्यु कौन जानिनी एक एपरी मधुरता भरा प्रेम द स्वीटनेस ऑफ ए लव प्रेमर एपरी मधुरता दरकार मोर जहा मृत्यु कौन जानिनी दैट नोज नॉट डेथ एन इमॉर्टल लव आउ तृतीय रे मागिले द रेडियंस ऑफ अ ट्रुथ और एवर श्योर नॉर्मली आम जिते सत्य को देखू जदि से रेडियंस नथिबो रेडियंस माने आलोक जदि सी जाझुल्यमान दिसु नथिबो आलोकित प्रज्वलित नथिबो ताले आमको से विश्वास आसेनी एथाई पृथ्वी मध्य कहूची मते सत्यर सेपरी रेडियंस मुख देखाओ जे मोर से सब बेले गोटे श्योरिटी थी फॉर एवर श्योर ही पड़थि स्वयं संपूर्ण स्वयं प्रतिष्ठित सत्य स्वयं प्रकाशित सत्य जार प्रकाश रे स्वयं प्रकाशित ना स्वयं सत्य हो स्वयं प्रकाशित स्वयं प्रकाश एपरी भाव स्वयं प्रकाशित थी से अविश्वास करिवार कोनोसी स्कोप ही नथि अवकाश ही नथि स्वतः विश्वास है प्रेम रे एपरी मधुरता थिबो जे मृत्यु केबे ताकू स्पर्श ही करि परिबे देखंतु डेथ टी को आपण केवल गोटे लोक आखि बुझी देवाटा भाबंतुनी डेथ इज द एंडिंग ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड डेथ मृत्यु 14 प्रकार अछि भागवत कहूँ मृत्यु 14 प्रकार अच्छी केवल अलग से आलोचना करवा डेथ आड़ को गला बेले देखो आलोचना करवा डेथ को आपण केवल गोटे लोक जीवन छाड़ीदेवा संगे तुलना करते
everything that finds its end is called death, and everything that survives death is called love. कारण प्रेम केवे अंत हुए गोटे जिनस संसार जार अंत ना सी हूँ प्रेम। आ प्रेम सहित आनंद युक्त, आ प्रेम और आनंद सहित सौंदर्य युक्त, माधुर्य युक्त। सबू को केवल सी ही प्राप्त कर सत्य को एक्सेप्ट कर जीवन, सत्य प्रति जार श्रद्धा थी, सत्य प्रेम श्रद्धा, बस से लाइन जो लाइन लिखाई श्रद्धा प्रेम सत्य, ये तीनोटी जिनिस आवश्यक। पृथ्वी निज एस्पिरेशन रे ये तीनोटी जिनिस को धरिकी आगु को चली। श्रद्धा प्रेम सत्य ये मंत्र भलिया को घोषित। A faith, a love, a truth. This is all what needs to carry us in this journey that the soul takes in us, that the evolution takes through us, and the earth uplifts through us. आज आलोचना को ये रखा। आपण मैंने किए कौन कहे शॉर्ट रे कह